Okay. Now see what is said. Next topic is division of fractions. Now read the points first. What is given to us? To divide a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. Now see here, the first example is related to the first statement. See, if we are dividing a whole number by a fraction, see, this is the whole number and we are dividing this whole number by a fraction. So what we do in this case? So what we do in this case, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. Now tell me, what is the reciprocal of this fraction? What is the reciprocal of this fraction? ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/2. ओके, सो व्हाट इट विल बिकम 7 मल्टीप्लाइड बाय 5/2. ओके, सो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, सो वी कैन टेक 1. ओके, 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, सो वी कैन राइट 1. ओके, now do the multiplication of numerator. So what it will come? 7 5 is 35. Do the multiplication of denominators. So what it will come? 2. So what is the answer? 35/2 is the answer. Is it clear to you? If a whole number is divided by a fraction, then we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. Okay. Now see the second statement. To divide a fraction by a whole number, we multiply the fraction by the reciprocal of whole number. Now tell me, this is the fraction here. And this is the whole number. What is the reciprocal of the whole number? Whole number क्या है आपका 2. 2 का reciprocal क्या होगा? What will be the reciprocal of 2? Reciprocal of 2. It will be 1/2. Okay, reciprocal of 2, what it will be? Shravani, it is wrong. It will be 1/2. Okay, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो जाएगा. 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा. जैसे 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3. 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4. 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5. ओके, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. ओके, सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन करो. 1 1 जा 1. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन करो. 3 2 जा 6. सो 1/6 इज द आंसर. ओके, now read the last statement. What they have said: to divide a fraction by another fraction, we multiply the fraction by the reciprocal of another. Okay, so this is my first fraction, this is my second fraction. Okay, so this is another fraction and this is one fraction. So what we will do? We will do the reciprocal of this another fraction. So 1/2 multiplied by 3. Okay, 3/1 we can write. Reciprocal करके हम लोग 3/1 भी लिख सकते हैं उसको. Okay, so do the multiplication of numerator. 3 into 1, what it will come? 3, and 2 into 1, what it will come? 2. So 3/2 is the answer. Is it clear to you? Is it clear to you? What you did not understood, Vaishnavi? रेसिप्रोकल करना है बस आपको, रेसिप्रोकल. ओके, डिवीजन के बाद जो भी, डिवीजन साइन के बाद जो भी वैल्यू हो उसका रेसिप्रोकल करना है. कीप दिस सिंपल थिंग इन माइंड. डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 था तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया. डिवीजन के बाद यहाँ पे 1/3 था तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया 3/1. डिवीजन के बाद यहाँ पे 2/5 था तो मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया है 5/2. और डिवीजन के जगह पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया है. कीप दिस सिंपल थिंग इन माइंड. डिवीजन के बाद जो कुछ भी है उसका रेसिप्रोकल करना है और मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखना है डिवीजन के साइन के जगह पे. इज इट क्लियर टू यू नाउ? Okay, when we will do the examples it will be more clear while solving the questions of the exercise. Don't worry. Now see what they have said. First, exercise 2.2, first question, solve the following. Now 2 plus 3/5. Okay, 2 plus 3/5.
So I can write this 2 as like this, 2 by 1 plus 3 by 5. Now, which type of fractions are this? Which type of fractions are this? Which type of fractions are this? ओम जादव, यहाँ पे एडिशन का साइन है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. These two are unlike fractions. First we need to convert these unlike fractions into like fractions. तो like fraction में convert करने के लिए यहाँ पे LCM of denominator लेना पड़ेगा. What will be the LCM? What will be the LCM? 5 will be the LCM. Okay. So next step, what it will become? We will write the fraction first. 2 by 1 plus 3 by 5. अब ये 1 जो है इसको मुझे 5 बनाना है, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 5. डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा. ये 5 ऑलरेडी है तो यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके. डिनोमिनेटर 5 होना चाहिए आपका, क्योंकि जो एलसीएम का वैल्यू है वही डिनोमिनेटर का वैल्यू होना चाहिए. So now solve this. So what it will become? 10 by 5 plus 3 by 5. So what it is coming? Denominator is same now. See. So 10 plus 3 is what? 13 by 5 is the answer. 13 by 5 is the answer. Check the sign. यहाँ पे एडिशन का साइन था. आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कंबाइन मत कीजिए. Okay, you are applying the concept of multiplication here. So check the sign first. What sign is given in between? Okay, next one. Okay, 4 minus 7 by 8. So I can write 4 like this, 4 by 1 minus 7 by 8. Again, these two are what? These two are unlike fractions. These two are unlike fractions. So first convert them to like fractions. Okay. So what is the LCM of denominator? डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है? 1 और 8 का एलसीएम क्या है? व्हाट इज द एलसीएम? What is the LCM of denominator? 8 is the LCM. Correct. Okay. So next step is write the fractions. 7 by 8. ओके. अभी ये डिनोमिनेटर में मुझे 8 लाना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 8 ईयर. अगर डिनोमिनेटर को 8 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 8 से करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1. ओके. सो व्हाट इट विल बिकम? 4 into 8 is what? 32 divided by 8 minus 7 divided by 8. Now see, the denominator has become same. So what we will write? 8 as the common denominator and 32 minus 7. 25 by 8 is the answer. 25 by 8 is the answer. Next one. Now see here, 3 fractions are there. Don't worry, 3 हो, 5 हो, 10 fractions भी साथ में हो तो भी टेंशन नहीं लेना है. आपको क्या करना है? ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. So what we will do? We will take the LCM of denominator. What will be the LCM of denominator? What will be the LCM of denominator? What will be the LCM? 70 will be the LCM. Okay, 70 will be the LCM. So next step में हम लोग क्या करेंगे? सारे फ्रैक्शन को लिखेंगे पहले. 2 by 7 minus 5 by 10. अभी डिनोमिनेटर में 70 लाना है. सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 70 आएगा? 14 से. अगर डिनोमिनेटर को 14 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 14 से करना पड़ेगा. अब ये 7 को 70 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा. डिनोमिनेटर को 10 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 10 से करना है. अब ये 10 को 70 बनाना है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 7.
डिनोमिनेटर को 7 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 7 से ही करना पड़ेगा. नाउ राइट डाउन द आंसर. सो व्हाट इट विल बिकम, 14 3 is 42 divided by 70 plus 20 divided by 70 minus 35 divided by 70. Now see, the denominator has become same. So what I can write? A common denominator, 70. Now what is 42 plus 20? 42 plus 20. 42 plus 20. 62. 62 में से 35 सब्सट्रैक्ट करो. How much it comes? 62 में से 35 सब्सट्रैक्ट करो. This will come 27. So this is the answer. Is it clear to you? Okay, now pay attention. I will tell you the technique how to find out the LCM. Okay, how to find out the LCM. क्योंकि आपको हर बार LCM निकालना पड़ रहा है अभी. So I will tell you the technique how to find out the LCM. Kalash Mandana, you can turn on the mic. Kalash. Kalash. Kalash Mandana. Can you hear my voice? Okay. Kalash, pay attention. No problem. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 10, 5 और 2 है. ओके, 10, 5 और 2 है. तो ये तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? विच इज द बिगर नंबर इन दिस थ्री नंबर्स? सबसे बड़ा नंबर है 10. ओके, तो ये जो बड़ा नंबर है, आप चेक करोगे कि ये 2 से डिविजिबल है क्या? यस इट इज डिविजिबल. ये 5 से डिविजिबल है क्या? यस इट इज डिविजिबल. दैट मीन्स दिस 10 इज द एलसीएम. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है वो तीनों आप साइड में लिख लोगे. उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर देखोगे. अगर बड़ा वाला नंबर बाकी दो नंबर्स को डिवाइड कर पाता है तो दैट मीन्स दैट इज द एलसीएम. ओके, सो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, it is what? It is 10. Next step, write down the fractions. 7 by 10 minus 2 by 5 plus 3 by 2. अभी मुझे 10 लाना है. यहाँ ऑलरेडी 10 है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1. मल्टीप्लाई बाय 1. यहाँ पे 10 लाना है तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 2. यस यस, आई विल शो दैट ऑल्सो. ओके, मल्टीप्लाई बाय 2. यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 7 बाय 10 माइनस 4 बाय 10 प्लस 15 बाय 10. ओके, सो पहले एडिशन वाले साथ में ले लो. आई कैन रीअरेंज दिस. 7 बाय 10 प्लस 15 बाय 10 एंड एट द लास्ट आई विल टेक 4 बाय 10. आई कैन रीअरेंज इट. बस साइन के साथ में आपको रीअरेंज करना है उसको. नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, सो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा. 7 प्लस 15, हाउ मच इट इज? 7 प्लस 15. 7 प्लस 15. 7 प्लस 15. 22. 22 माइनस 4. 22 माइनस 4, 18 अपॉन 10. ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये फ्रैक्शन को ला सकते हैं हम लोग. सो हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/5. दिस इज द फाइनल आंसर. 9/5, दिस इज द फाइनल आंसर. क्योंकि यहाँ पे 18 और 10 दोनों भी 2 से डिविजिबल है, हम लोगों ने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है. 9/5 इज द आंसर. ओके कलश, पे अटेंशन. यहाँ पे एलसीएम हम लोगों का 70 आया था इन दिस क्वेश्चन. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू फाइंड द एलसीएम. 5, 7 एंड 10. ओके, ये तीनों डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया. सबसे बड़ा कौन सा है? 10 है. ओके, अभी
7 से तो 10 डिविजिबल नहीं है, 5 से है बट 7 से नहीं है। सो क्या करो आप, 10 का डबल करो, इट विल बिकम 20। अब चेक करो 20 से 7 डिविजिबल है क्या, नहीं है। सो 3 गुना करो, 30, 7 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 4 टाइम्स करो, 40, 7 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 5 टाइम्स करो, 50, 7 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 6 टाइम्स करो, 60, 7 डिविजिबल है क्या, नहीं है। 7 टाइम्स करो, 70। अभी देखो सारे नंबर डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है और 7 भी डिविजिबल है, दैट मीन्स द एलसीएम इज 70। इज इट क्लियर टू यू कलश? Is it clear to you, Kalash? See the next question then. Next question is now, which type of fraction it is? 8 1/2. कौन से type का fraction है ये? Mixed fraction. Yes. Who wants to try this? Yash Bhalekar will try this. Yes, sir. बोलो. Sir, they are in mixed fractions, so we will first do them in improper fraction. It was 17/2 and 29/8. So 17/2 minus 29/8. अभी ये कौन से टाइप के फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, पहले इनको Unlike लाइक fraction. करेंगे, ओके, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट वी डू, वी टेक द एलसीएम LCM. ऑफ 6. denominator. What is the Sir, LCM? 8 is the 8. Correct, 8 is the LCM. So Yes. now 17/2 minus 29/8। अभी डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 8 लाना है, तो 4. आई विल मल्टीप्लाई बाय 4। Here 4. also 4, यहाँ पे 8 already है, so I will multiply by 1. So what is 17 fours are? 17. 68. Yes. Yes, sir. So what it will come, 68 minus 29, how much it comes? 69 minus 6, 40. 40. Is it so? Yes, sir. I don't think so. Do it properly. 68 minus 29. Okay. I 39, 39. हाँ, 39 is the answer. So 39/8 Sir, is I the, did 69 minus 20. हाँ, okay. So 39/8 is the answer. Okay. I think so. In question number 1, E is remaining. You can turn off the mic. We will do that also. E1 is not there, I think so. I have not typed it. Okay. Can you tell me the question of E? What is the question of E? Yes, Yuvraj. Just tell me the question of E. In question number 1, E. Okay, Palak, you tell. Yes, sir. Hmm. Sir, E1 is 2/3 2, 2/3 plus plus 3 1/2. 3 1/2. Okay. Yes, sir. Tell me the answer also now. You only tell me the answer. What we will do. Okay, sir. Hmm. Sir, first the answer will come 8/3 plus Okay. 7/2. Okay. Next. Sir, then we will do the LCM What is of the 3 answer? and 2. So answer will come 6. Okay. 6. Sir, then we will write the fraction 8/3 plus 7/2. Correct. Next. Sir, then we will see 3 comes, 6 comes in the table, 3 twos are, Okay. and 2 comes, and 6 comes in 2 threes are. Okay.
Sir, 8 2s are 16 upon 6 plus 7 3s are 21 upon 3, 6. Okay, Sir, then answer will come 37, 37 upon 6. correct. This is the answer of E. This is your E1, huh? Question number 1 में E वाला है ये. Turn off the Yes. mic, beta. Very good. Okay. See the next one then. Chalo, who will try this? G. Okay, Riddhi Mantri will try this. Sir, Hmm. first we'll convert mixed fraction into improper fraction. Okay. So 6 1 by 2 means how much? 13 by 2. Correct. 22 by 5. 22 by 5. Correct. 4 by 3. Correct. Now next step. LCM of. LCM of denominator. Yes. Yes. What will be the LCM? See, if you are finding it difficult to get the LCM, what you do? You do the multiplication of all these numbers. You will get the LCM. 5 3s are 15, 15 2s is 30. So what is the LCM? 30 is the LCM. Okay. So 13 by 2 plus 22 by 5 minus 4 by 3. अब बोलो next step क्या करना पड़ेगा? 2 15 जा. Okay, correct. 2 15s are here. 5 6 जा. Correct. Here. 3 10 जा. Correct. Now tell me what is 13 multiplied by 15? Tell me 15 tens are how much beta? 15 tens are 150. and 15 threes are 45. ये दोनों को ऐड कर दो 195. 195. 195 by 30. Okay. 22 6 are 22 5 is 110. उसमें 22 ऐड कर दो 100, 110. 132 32 upon 30. minus 4 tens are 40 by 30. and that's it. Now 40 we by 30. हाँ अभी क्या करना है 195 प्लस 132 करना है हाँ. 7. 327 327 minus 40. 40. So what it will come? 287. 287. 287 by 30. This is the answer. Okay, Yes, sir. turn off the mic. See now this question H1 is homework to you. You will do it. Question number 1 H1 is homework and you will do it in CW only. Okay. Now we will start the question number 2. Arrange the following in descending order. So who wants to try this? See, only the regular students, they raise their hands. What about others? What about others? Who wants to try this?
Kalash, I cannot help you with that. Your mic should be on, then only you can speak up. Okay, Vaishnavi will try this. Vaishnavi. Yes, Vaishnavi, your mic is on. Sir, first we will convert improper fraction, mixed fraction into improper fraction. Okay, so which are the mixed fractions here? 3 1/3 and 8 1/2. Okay, so after converting it, what it will come? 10/3. Wait a minute, let me write it first. Okay, 10/3. And Next, 17/2. 17/2. 17/2. Okay, next what we will do now? Then we will take LCM of 9, 3, 21, 5, 7, 10, 7, 3. Okay, so what is the LCM then? $210 will be the LCM. No, 210 not possible because 9 is not divisible by 210. So 420 करके देखो, 420 से 9 डिविजिबल है क्या? 9 4 are 36. So 4 plus 16 not. So 630. Okay. पहले मैंने कितना लिया था? 210. Next I took double of it, 420. Next I took 3 times of 210, that is 630. LCM of denominator. What it is? 630. Now first fraction, 2/9. Second fraction क्या है? 2/3. Third fraction क्या है? 8/21. Fourth fraction क्या है? 1/5. Fifth fraction क्या है? 3/7. उसके बाद next fraction क्या है? 7/10. What is the next fraction? 12/7. What is the next fraction? 10/3. Last one is 17/2. Now in denominator I have to bring 630. Yes, beta, give the answer. 970 to 630. Correct. 970 is 630. हाँ, यहाँ पे 3 210 are 360. correct. Next. Thirties are 21 30s are. okay. Next. Oh, 5 126 are. 126 are okay. Next. 90s are 790s are. correct. Next. 1063s are. Okay. 790s are. 790s are 90s. okay. 3 Next. 210s are. 210. Correct. Next. 315. Yes. Now do the multiplication. 2 multiplied by 70. 340. 140 beta. Every time the denominator will come 630. We are already known with that fact. Okay, so I will directly write 630. Every denominator is 630. Okay.
And now what about this numerator? 2 multiplied by 410, it will come 420. 420. It will come 240. It will come 126. It will come 270. 7 into 63. How much it comes? Ha. 441. 12 nines are 1080. 2100 divided by 630. And here 315 multiplied by 17. Do it fast. Do the calculation. आप calculation कीजिए fast. 17 5s is 85. 8 carry. 17 1s are 17 plus 8. It will come 5495. 549. 9 नहीं आएगा ना बेटा. 17 5s is 85. 8 carry. 17 1s is 17 plus 8 is 25. Okay, 2 carry. 17 3s is 51 plus 51 plus 2 is 53. 5355 आएगा. Yes. Okay, now we have written all the things. Now what they have said to us? Descending order. Descending means what? Decreasing order. तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहले आएगा. सबसे Smallest to largest. no decreasing बेटा. Decreasing. सबसे बड़ा वाला पहले आएगा. सबसे बड़ा वाला पहले आएगा. So this will come first. 5355. 5355. हाँ, next 2100. 2100 divided by 630. Next 1080 upon 630. next 441. 441 upon 630. Next 420 upon 630. next 270 upon 630. 270 upon 630. Next 240 upon 630. next 140 upon 630. next. 126 upon 630. हाँ, तो बोलो अभी किसका फ्रैक्शन कौन सा है? This is your 8 1/2, correct? Yes. हाँ, next 3 1/3. 3 1/3. Next 12 upon 7. 12 upon 7. Next 7 upon 10. 7 upon 10. Next 2/3. Next 3/7. Next 8/21. Next 2/9. Next 1/5. Is it clear to you? This is the descending order. Yes, sir. Okay. You will rejoin the session. If the session gets over, you will rejoin the session. Yes. Sir, can I mute? Yes, mute yourself. Everybody will rejoin the session if the session gets over. Okay. See the next question then. Okay, Shravani Theng will give the answer. Yes, sir. So first we will, if we have to multiply that and reduce to 31. So 7 does not have denominator, so we will consider 1 as the denominator. Okay, correct. Next. Then
then we will multiply it by cross multiplication. नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। मल्टीप्लीकेशन के रूल्स चेक कीजिए आप एक बार। Okay, to- so 7 3s are 21. okay, second one. Second one. Second one. Siddhi will give the answer. Sir, it doesn't have denominator, so 1 will be the denominator of 4. Okay. 4 by 1 multiplied by 1 by 3. Okay. So 4 multiplied by 4 1. ones are 4 and 3 ones are 3. So our answer is 4 by 3. Correct. Okay, Shravani, that question was over. So your chance is finished now. Okay, you gave the answer for that question. Okay, next one. Next one. Akshara will give the answer. Akshara Sevalkar. Sir, first, 2 doesn't have a denominator, so we will make one denominator. Okay, next. So, 6 2s are 12 and Correct. 7 1s are 7. Okay, 12 upon 7 is the answer. correct. Okay, अभी आप लोगों को समझ Yes. में आ गया है how to do this. Okay. Next one, who will try? Bhushan Kayan, they will try this. 2 upon 3, 4 upon 1. So what it will become? 4 2s are 8 and 3 ones are 1. 3 ones are 1. 3 ones are 3, beta. 3 ones are 3, sorry. Okay, so 8 by 3 is the answer. Okay, next one, who will try this? Pranav Darbatswar will try this. Pranav. Pranav will try this. Sir, first we have to convert mixed fraction into improper fraction. So what is the conversion? 2 by 3 का conversion क्या है? 8 by 3. 8 Correct. upon 3. 8 upon 3. Now do the multiplication of numerators. What it will become? 16 upon 9. Denominator का multiplication आएगा 3 3s are 9. Numerator का multiplication आएगा 8 2s are 16. So 16 upon 9 is the answer. Okay, next Palak Jain will give the answer. Next question. Yes, sir. Sir, first the multiplication directly, sir. 2 7s are 14 and 7 9s are 63. Okay, so 2 7s is 14 and 7 9s is 63. Can we reduce Yes. this to the simplest form? Palak? Yes, sir, by 7. So divide by Sir, 7. answer will be 2 by 9. 2 by 9, correct. Okay. 2 by 9 is the answer. Yes, next. Divyal. Divyal Jain. Divyal, can you hear me? Yes, sir. हाँ बोलो. What is the answer? Sir, 27 upon 25. 27 upon 25. Correct. Numerator का multiplication आता है 27, denominator का आता है 25. So 27 upon 25. Correct. Next. Yes, sir. Om Jadhav will give. Om Ganesh Jadhav. Yes, sir. Hmm. Sir, 1 multiplied by 3
3 multiplied by 5 is 50. Sir, 3 by 15. Okay, 1 by 3 multiplied by 3 by 5. So it comes 3 by 15. Is it in the simplest form? Yes, sir. Sir, 1 by 15. Sir, 1 by 5. 1 by 5. Now this is in the simplest form. It was not in the simplest form previously. Okay, now this is in the simplest form. So I told it before also, always write the answer in the simplest form. Okay, next one. Who will try the next one? Okay, Radha Bagadia will try the next one. Radha Bagadia will try the next one. Okay, sir. 1 by 3 into 15 by 8 into 28 by 45 Hmm. is equals to 1 into 15 is equals to 15 into 28 is equal Now see, pay attention here. to Radha, 20. Radha, pay attention here. See, keep the mic on only. Pay attention. See, now here the calculation is more. So in order to avoid the calculation, what we can do? हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 28 करते हैं, यस और नो? और डिनोमिनेटर में sir. क्या करेंगे हम लोग? 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 45. तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे ना, कैलकुलेशन कम हो जाएगा. 15 वन जा 15 थ्री जा, yes or no? Oh, 2 yes, sir. 4s and 2 14s. Again 2 2s are 4. Here it will come 7. So what is remaining in the numerator? Only 7 is remaining. And what 7 is and down 3 into 2, 6. 6 into 3 is equals to 18. 18? 7. That's it. 7 by 18 is the answer. Sir. Okay. What's the time? Okay, still we have 5 minutes. Still we can cover up 5 minutes. Okay. Yes, sir. Yes, Shravani Thing wants to give the answer. Yes. Sir, I'm not. Huh. So, sir, all we will first write 11 by 5 into 3 is equal to 33. 33 by 5. 3. Beta, your multiplication is there. So straight away what we do, 11 multiplied by 3 multiplied by 5. 3 into 5. And denominator में 5 multiplied by 10 multiplied by 10 20. multiplied by 22. So So this, we will multiply it. no. 5 gets cancelled. Calculation कम करते हैं ना हम लोग. इतना calculation क्यों करना है? जो cancel हो रहा है वो cancel कर देंगे. 5 gets cancelled. डायरेक्ट भी कर सकते हैं. Yes. अभी ये स्टेप में किया है ना मैंने. ये स्टेप लिखा है उसके बाद कैंसिल किया है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का चीजें कैंसिल होता है, ये तो पता है ना आपको. तो 5 वन जा और 10 भी कट होता है अगर 5 टू जा करे तो. हाँ और तो 22 नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता. so what it will come? 33 divided by 3 by 220. 220. This is the answer. So इसको हम simplest में नहीं कर नहीं सकते. कर सकते. It is नहीं in कर the सकते. it is in the simplest form. Yes, Anushka Gilda, what is your doubt? Anushka Gilda. Sorry, Anshika. I'm sorry. Sir, when you started and give statements na, before starting exercise, in that statement there is given to reciprocal. We didn't read reciprocal in any sum. That is for division बेटा. यहाँ पे multiplication का साइन है. यहाँ पे अगर डिवीजन का साइन होता ना तो हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है. Okay, sir.
Yes, Yatharth Poplia, what is the doubt? Yes, Sir? Yatharth. Uh, Sir, 33 and 220 can be multiplied by divided by 11, no? yes, correct. 33, yes, divided by 11, correct. 3 by 20 is the answer, correct. 3 by 20 is the simplest form. Yes, Yatharth, that is correct. Okay, any other doubt? Siddhi, how can 11 and 12 get cancelled, beta? 11 and 12 cannot be cancelled. Same numbers get cancelled. या फिर डिविजिबल होगा तब कैंसिल होता है. यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो 11 1 and 11 2 in this way. Okay, so here also you will get the answer 3 by 20 only. See, 10 and 2 is remaining in the denominator, so the product is 20. Yes, yes, Siddhi, this you can do. Okay, so we will stop here. Tomorrow we will continue with the next part. Yes, 10 and 2 also. If it is 10 upon 2 na, you can do the, means you can cancel it, 2 1s and 2 5s. Like this you can do it. Okay, if it is like this 2 by 10, then what it will come, 2 1s and 2 5s. Like this you can do. Okay, so we will continue next part tomorrow. Yes, the homework, you know what I gave you the homework. In question number 1, K and I is homework.